Chalo, let's try. So it's already done. So we have to start with distinction between capitalistic, socialistic, and mixed economies. So that's what distinctions. Yes, girls. Okay. Capitalism. Socialism. Ooh. Is it the same hand you got during accident? Welcome. And make it one page like this. We will do all three, yeah, together. Socialism, capitalism. Mixed. ऐसा कर लो. Short points बना के we will wind it up. I think Wind it इसके up बाद the chapter is complete, ना? Yeah. And then we can do revision. You want to, or shall I start the new chapter? Right? We do revision because our duties are also coming closer. Let it be. Your duty to study. Our revision. करते हैं. तो अभी रूम थोड़ा ठंडा लग रहा है. पहले तो ऐसा लग रहा था. अंगा थोड़ा ठंडा. Yes, you are doing some unbudgy work. I don't have any. So we don't have maths class. Today? Yes. Why? What happened to? He went to village. Oh, how did you do that? Ashutosh sir, ये वाले वीक में आज से छुट्टी है, वरना वो छुट्टी है. Sir done. Get started. चलो. Shall we? Yes, sir. You become the new someone actually. Someone who I class me or read that man and just something. Yeah. Copy down like this. Distinction. Sir, and like- basis. What is it? Basis like ownership notice. वो सब वो इधर करो. अगर मार्जिन में देता है. हाँ वैसा ठीक है. सर ये वाला टेबल बनाना. हाँ टेबल मैं दे रहा हूँ. पॉइंट्स में दे रहा हूँ. या वर्ड्स में दे रहा हूँ. और राजेश सुना है कि पता नहीं इधर लगता है कि देखो. उसने बोला था हमारा. Lara Apple. Any students? It is very important. What happened to the other question? शरद ना उसका छुट्टी रहेगा. Week off. चलो point number 1. You write ownership. हाँ गुड इधर ही आ जाए. बेसिस. हाँ basis में ownership लिखो. Shall I write on the board? No, sir. Ownership. Capitalist. Means of production. Owned and managed by private sector. Means of Production. Owned and managed by Private. sector. Other side सर वो by पूरा नहीं लिखना. Other side सिर्फ by the government लिखो. So government same ही words है समझा. Socialism में लिखो by the government. Socialism में by the government लिखा. Mixed में क्या लिखेंगे? Both. बस. mix Both का मतलब क्या है? mix. हाँ. Both public and private sector together. अभी motive. Second point का basis है motive. Self interest and profit motive. Self interest and profit. Profit लिखना बहुत जरूरी है. Self interest and self interest and profit motive. Profit motive. एक कप पानी डालना. Self interest and profit motive. Capitalism में लिखो. Socialism में लिखना. Social welfare. इधर कोई प्रॉफिट नहीं है. वेलफेयर के लिए काम होता है. Social welfare. लास्ट में लिखना. Private sector with profit motive. Private sector with profit motive. A bottle दे दो. You guys have brought? नहीं, अपने bottle नहीं दे. Private sector with profit motive and
Public sector, सोशलिज्म में मोटिव में क्या है? welfare. And public sector with Public sector with welfare. मिक्स में पब्लिक सेक्टर भी चलेगा. हाँ. And private with profit. Public sector public sector with welfare. मोटिव. Private sector with profit hotel and public sector. नहीं, मैं general conclusion. सर थर्ड पॉइंट. हाँ, रुक जा बच्चा. Solution of central problem. Before you write this point, you remember the first chapter I might have taught you what to produce, for whom to produce. अभी चल रहा है वो सर. अभी चल रहा है स्कूल में. तो हर तीन इकोनॉमी में ये जो प्रॉब्लम है कौन सॉल्व करता है? अभी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये इकोनॉमी में कौन सॉल्व करेगा? प्राइवेट पीपल. गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा. इधर कौन करेगा? गवर्नमेंट. हु विल नॉट इंटरफेयर? प्राइवेट. इधर पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि मुझे कितना किलो राशन देना है आपको. प्राइवेट सेक्टर में कौन डिसाइड करेगा? डिमांड एंड सप्लाई. अरे पहले समझ लो व्हाट आर यू राइटिंग. सर आपने बोला था नोटिस करेक्शन के लिए तो अभी कंप्लीटेड है क्या? नेक्स्ट वीक है ना? चलो राइट डाउन. सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स. ओए मोबाइल आई हैव टू टेक एंड कीप इट हियर. Sir, I have not touched my mobile. Not. Did I mute you? No, but you told him so then you say in Leave it. general and then No. Why should I? Solution of Central problems. I don't think so. Capital S बोलो. Yes, sir. All central problems solved only with are solved only with price mechanism. I hope you remember what is price mechanism. Solved only with Price mechanism. Let's understand for 2 minutes. You remember I might have told this is my DD curve, है ना? And this is my which curve? Supply curve. Whichever point is intersecting, हम लोग बोलते हैं इसको EP. What is EP? Equilibrium price. Here it is the free forces of demand and supply intersecting, and we are getting a price. Here यही EP है, but socialism में क्या करेगा? Price will be fixed lower than that. Why? Because ये किसका decision रहेगा? Government का decision रहेगा. Whereas in mixed, price mechanism will follow in which sector? In private sector, correct? And welfare will stick to which sector? To public sector. देखो पूरा कोविड में India was the only government which was distributing free rations to the more than 800 million families in India. One ये हो गया. Now she was talking, they were talking. अभी ये अभी finally है. इधर ही बैठो. I'll switch it off. I'm putting some difficult concept into their head. All three are in the database. लिखो. socialism is No, shall I go and sit behind? It is going to create trouble. socialist. ये समझा क्या concept? हाँ. इधर आके price fix होगा, price mechanism है. इधर fix होगा government decision. ये मेरा equilibrium price है, but फिर भी government उसे नीचे price लगाता है. क्यों लगाता है? Because public का welfare है. Whereas इधर private sector में price mechanism करेगा ये. Public sector में ये होगा. समझ में आ रहा है? So right away. All central problems are solved. Only with the Price mechanism. Socialist में आ जाओ. Price fixation is through economic planning. सर कैपिटल का क्या है? और तो मत लिखो आगे. बाद में. price fixation. Socialism है ना? Is through economic planning. Socialist का opposite. Sorry.
Price fixation is through economic planning. Next. Price mechanism and planning work simultaneously. Planning mechanism, price mechanism and planning work simultaneously. Done? Sure. Now the next basis is nature of occupation. Next basis is Nature of occupation. Volume में देख लेना उधर से ही करना मैं. It's on page number 62. Sir, for volume नहीं है तो कैसे लिखेंगे? There is a one movie in our Punjabi I think पागलों का सरदार. अभी सोच लो इधर कौन है सरदार. She's popping up and saying sir मुझे मत बोलो sir. Point number 1 under capitalism. Free entry, nature of occupation है ना? Free entry. Of firms. Free entry. Other side, restricted entry. Other side, restricted entry. Third side, freedom only under government sector. Freedom only under government sector. Next point लिखो competition. 1 second. competition. Capitalist, you write free competition. Socialism में लिखो no competition. ब्रैकेट में लिख देने का गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस एवरीथिंग. एंड मिक्स्ड में लिखो लो डिग्री ऑफ कंपटीशन. LO लो डिग्री. सर इसमें मिक्स्ड में लो LOW Low degree of कंपटीशन. तो second point ये मैं एक्सप्लेन करूं कैसे समझ में आ रहा है आपको. लो क्या लो डिग्री ऑफ कंपटीशन. What's the socialism? देखो what is competition by the way. In a private sector anyone can enter the market, sell his product and earn profit. Free competition. सोशलिज्म में तो कंपटीशन का सवाल ही नहीं है. क्यों? गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को अंदर घुसने नहीं देगा. जबकि हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी में देखो कंपटीशन है. अभी अपने पास एक मुकेश है, एक टाटा है, एक अंबानी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. But there are thousands of Ambanis. I can say there is overall competition. इधर overall नहीं है. Competition है but very low है. क्योंकि only private sector में competition है. Public sector में तो किसका monopoly है? Government का दादागिरी है. Can anyone enter into public sector in India? Nobody. Government बोलते हैं ये हमारा sector है. इसमें जो भी price होगा या output होगा वो हमें fix करें. समझा? Let us go to 6th point. Consumer sovereignty. If you don't understand sovereignty, you can remember freedom. This consumers. No competition. What? Socialism point में. Socialism में limited रहेगा. No competition. उसका point क्या? This is the word. Free competition. Free competition फिर उसके बाद. No competition. इसका मतलब है freedom. No degree. हाँ, government produced everything. वो उसमें लिखना है. That. Consumer sovereignty, you can write freedom. Sovereignty का मतलब है freedom ही हुआ. Next. 1 second. Consumers are fully free
Capitalism. Sorry. Consumers are fully free to buy any goods or services. What? Capitalism. Consumers are fully free. सोशलिज्म में you only tell me freedom है क्या? कंज्यूमर को फ्रीडम देता है सोशलिस्ट गवर्नमेंट? नो सर। क्यों? क्योंकि सर उसमें प्राइवेट सेक्टर्स को एंटर नहीं कर सकते। हाँ तो ठीक है, सब कुछ किसके हाथ में रहता है? गवर्नमेंट। तो उधर लिखो नो फ्रीडम टू कंज्यूमर्स, जो गवर्नमेंट देता है वो आपको लेना ही पड़ेगा। No freedom to consume. थर्ड, limited consumer freedom. After this, you guys are going home, is it? Yes. Then seventh point, distribution of income. Ashwin's on sociology is living on the desert and wisdom. Now, right for private sector. Large inequalities of income. Private sector, large, private sector, right? Capitalist. Sorry, Large inequalities of income. Inequalities of income. Income. Social sector में लिखना, inequalities are less or small, not less. Inequalities are less, small. Sorry. Mixed में लिखो, private sector, high inequalities, private sectors। high inequalities, mixed में। सर समझा नहीं आपने क्या बोला? Private sector. में high inequality रहेगा, and in public sector less or no inequality. किधर इनकम का inequality ज्यादा रहेगा, समझा? The last point, Private economic sector are high inequalities. And public sector. हाँ, बोलो public sector क्या होता है? Low. Economic fluctuation, X basis. Public sector का low economic. Less or no यार, दिमाग पुर्जे के अंदर रख के काम होता है। Economic fluctuations. Hey, who can tell me the meaning of the second one? Prices go up, prices go down. That's fluctuation. Keep on fluctuating. Normally, we want a price. देखो, if I explain through a graph, are you understanding? No. So, I want a price which is something like this. ये generally कौन सा economy में possible है? ये only socialism में possible है. Capitalism में क्या होगा? Prices are free to move up and down. Nobody can control them. Mixed economy में क्या होगा? ये जो picture है, ये private sector में रहेगा और ये जो picture है कौन सा sector में रहेगा? Public sector में. समझ में आ रहा है? Is fluctuation bad thing? Yes. आज मैं अपना goods बना रहा हूँ. मेरा गुड्स बन के 3 महीने के बाद आएगा फैक्ट्री से। That's why there's a risk. And I am very volatile कि ये प्राइस आज जो मुझे मिल रहा है वो 3 महीने के बाद भी मिलेगा। गवर्नमेंट बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने एक फिक्स प्राइस रखा है जिसको हम लोग MSP बोलते हैं। You know what is MSP? Minimum Support Price. ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए नहीं रखता है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए रखता है। देखो ये पंजाब बॉर्डर में जो लड़ाई हो रहा था, वो लोग दिल्ली में आके ट्रक्स वगैरह डाल के बैठ जाते थे, याद है? वो जो स्ट्राइक्स होता था अभी मतलब 1 year or 2 years बिफोर दिल्ली में बहुत हंगामा होता था ना, तो वो MSP के लिए होता था, फार्मर्स प्रोटेस्ट। गवर्नमेंट MSP दे रहा है, बट गवर्नमेंट का जो MSP है, ये जो
मिडिल बेंच लोग को लगता है कि गवर्नमेंट कम दे रही है। And to be very frank, I don't know, you won't be understanding what I'm trying to speak now, because जो बिचौलिए बोलते हैं ये हिंदी में, बिचौलिए मतलब जो मिडिल बेंच रहता है वही आके स्ट्राइक में बैठा है। अभी फार्मर 15 दिन से अपना फार्म छोड़ के रोड पे लेटा रहेगा क्या? वो एक दिन बेचारा घर पे नहीं बैठता है, क्योंकि he knows that farming is not very easy. अभी you two are farmers and I am Sara are middlemen. हम क्या करते हैं, आपसे लेते हैं बहुत सस्ते में, हम अपना प्रॉफिट रख के बेच देते हैं। जब मालूम पड़ा कि मुझे और सारा को तो प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा है, हम लोग दोनों रोड पे बैठ गए था ना, नहीं चलेगा गवर्नमेंट का। सारा मुझे ना, हाँ सारा, how did you remember my name? sometimes I do. रिया बुलाते थे आप। That's it. And these two guys are poor. ये क्या है सर, सारा छोड़ना अपने को, अपना फार्मिंग से मतलब। और पूरा देश को दिखाने का फार्मर्स के ऊपर है ना, गवर्नमेंट अत्याचार कर रहा है। I don't know, you remember that girl, Thanda Bartan, what is it, that girl? She's only 14 years old from Yugoslavia. Thanda Bartan, that girl who cried in UNO कि मोदी जी अपना गवर्नमेंट फार्मर को कितना अत्याचार कर रहा है, तो पूरा कंट्री वो लड़की का आंसू के पीछे लग गया। हमारा बीजेपी ने पूछा, वो लड़की ने कभी इंडिया विजिट भी किया क्या, पहले उससे पूछो। हाँ, ग्रेटा थनबर्ग, द गर्ल थनबर्ग, शी इज ओनली 15 years old। यूएन में उसने बुक लिख दिया, बोल दिया कि मोदी इज डूइंग अ डिक्टेटरशिप वर्क, आई माय टीयर्स आर द फार्मर्स ऑफ पंजाब। तो किसी ने बोला, बेटा पंजाब कभी आया भी है क्या? तो लड़की बोली, सर मैं तो इंडिया भी कभी नहीं गई। तो एवरीथिंग दैट यू सेइंग, मतलब उसका आंसू का पैसा और किसी ने दिया देगा। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? मैं आपका घर का हालत जानता ही नहीं है, फिर मैं कैसे इतना बड़ा स्टेटमेंट छोड़ रहा हूँ कि योर हाउस। हाँ, बिकॉज ये ना इंडिया में है ना, ये डर्टी पॉलिटिक्स है। अभी देखो, आई डोंट नो वेदर यू अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज और नॉट, within 15 to 20 days you will see one more big attack will happen on Pakistan. Yeah. And India is getting ready very steadily. And ये बात पाकिस्तान को भी मालूम है, इंडिया भी मारेगा ना, बहुत 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 मारेगा। हाँ, बहुत मारने वाला है। But पाकिस्तान cannot do anything. Exactly 10 दिन के पहले ना, मारने से पहले पाकिस्तान का रोना स्टार्ट हो जाएगा कि इंडिया हमको खत्म करने वाला है, इंडिया हमको ये करेगा, इंडिया हमको वो करेगा। बट अभी भी वो जो आतंकवादी लोग हैं, जो टेररिस्ट, अभी भी वैसे ओपनली लोग बड़ा बड़ा स्टेटमेंट देता है, बहुत कुछ चल रहा है पाकिस्तान में। हाँ, इंडिया फील्स कि अगर अभी नहीं दबाया ना, मे बी नेक्स्ट 6 months में एक बड़ा अटैक जैसा पहलगाम की तरफ फिर से पाकिस्तान इंडिया के ऊपर करेगा ही करेगा। बिकॉज बोलते ना, ये लोग इतना अंदर घुस गया ना, दे कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। So we feel there are certain nations even today which is like a living cancer to the world. North Korea. I don't want to name few countries are there. Correct. So these countries had to be controlled at correct time. मुझे तो कभी-कभी लगता है इतना ये लोग bombs मारता है, but to certain extent it is correct, right? But who is dying? The common people are dying. It's a very tragic. Neither US nor Israel nor the Iran leader. Common people are victims. You know what does the leaders say? ये collateral damage. You understand what is collateral? हम दोनों लड़ रहा था, ये लोग बीच में आया तो मारना तो इनको ही है। तो मुझे याद है, इंडिया का एक लीडर था, उसने गलती से बोल दिया कि मिलिट्री एंड आर्मी मैन आर लाइक scapegoats. You know who are scapegoats? बलि का बकरा। हम तो इनको पालते हैं इसलिए कि एक दिन इनको काटे। That is wrong word. Who said that? And this will be a moral debooster to our Indian army. Who said that? हमारे कुछ कमेंट्स के बाद लोग कुछ भी बोलते हैं। तो मैं बोलता हूँ एक आर्मी का जवान, whether it is a girl or a boy, ये टाइम पे पहला टाइम था, ladies are briefing the media, and many girls, sorry I cannot say girls, their ladies were fighting on the front line with Pakistan, and they were sharing their experience. So this is the brightest time I can feel under the leadership of Modi ji that ladies का भी involvement हमारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में बहुत ज्यादा है। Operation. मैं तो चाहता हूँ कि और भी ज्यादा होना चाहिए। The day when all the ladies of our Indian family, at least एक lady भी रहेगी ना, you will see what is Indian forces.
You go to Israel, I don't know, whenever you are traveling, when you become 18, 2 years Who of are traveling to Israel? military training is a must. अभी तो नहीं मतलब. And a girl or a boy after 18 gets a stain gun, and they keep it with them 24/7. सोचा अगर आप हाँ उनके साथ रहते ही है, but they are so much mentally groomed not to use that stain gun for unwanted purpose. ये अगर अमेरिका में देते तो अमेरिका अपने आप को मार के मर जाएगा. Americans are fools. They can get guns like you get any fruits and nuts from the shop. Any type of Gun grocery culture store you बहुत can get guns. बहुत common है. You can get the guns, no license, nothing. You ऐसा just है. don't need to have a record of any कुछ arrest. भी नहीं. So slowly and steadily, world is coming out of a biggest threat. सर इधर तो बताना भी पड़ता है ना. इधर मिलेगा भी नहीं तुझे, बताना तो दूर की बात. सर अगर लाइसेंस रहता है तो भी बताना पड़ता है कि कितना कहाँ फायर बोलेगा. किया. हाँ बहुत ज्यादा. और इंडिया एक तरह से बहुत अच्छा करता है कि गन कल्चर इंडिया में नहीं आया. अब बिहार में देशी कट्टा वगैरह मिलता है, वो अलग बात है. Tasers also illegal now. मेरा ब्रदर लेकर आता है गन, बोले मैं बोला अरे लेके जा, चुप चुप, मेरे पापा को पता था. मैं बोला मालूम पड़ेगा तो क्या, चुप ना बोल. I tried taking a big toy gun with me at the airport, and they stopped me. They took my gun away and they shot it. ऐसे. So we always believe ये तीनों economy है ना is going through a big change. Very few capitalists want to be capitalists here. Socialist already USSR टूट चुका है. 15 countries में टूट चुका है USSR. और अभी हर एक mixed economy is not India. We know how to balance the public sector as well as the private sector. Look, India is the only country in the world which is talking to America also and doing business with Russia also. अगर रशिया के साथ बिजनेस किया तो अमेरिका तुझे एनिमी नंबर 1 देखता है. अगर अमेरिका के साथ दोस्ती किया तो पुतिन बोलता तू मेरा मुझे तेरा शक्ल भी नहीं देखने का. But India is the only country which is smartly moving. अभी देखो during this war, Iran country has thanked India. But सब लोग ने बोला no, India is siding with Israel. No, India they kept a very safe distance. तो ईरान जो मुस्लिम का जो स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर है आज के टाइम पे, he wanted और he praised the support of India. पाकिस्तान का पेट में खलबली कि क्या हो रहा है, हमारा ये दुश्मन सब इंडिया के साथ दोस्त बन रहा है. If maybe next 2 days or 3 days if Iran is attacking Pakistan, Pakistan cannot withstand for even 1 day because Iran के पास उतना फायर पावर है, and Iran will ban them क्या बोलता black and blue. And इंडिया का तो अपना काम चुपचाप रहने का. रुको सर, मेरा बहुत सारे लोग हैं, कभी टीटीपी मार रहा है, कभी अफगानिस्तान मुझे मार रहा है. मतलब उनके अंदर ही 3-4 ग्रुप है. इंडिया बोलता है हमको ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है, ये लोग खुद ही लड़ मरेगा. फिर मैं जाके बोलेगा अच्छा हमारा पीओके हमको दे दो. Understood what I am saying? Although from economics I went into politics, I'll pull you back into economics. ये जो fluctuations होता है ना, I can talk for hours. I don't know whether you have the interest. Talk to us. मैं talkना है उधर टाइम देख लिया बच्चे ने. Fluctuations का मतलब यही होता है कि there is no stability. देखो I think youth has to be guided very properly now. You three guys. क्योंकि आपका माइंड दिखता तो इधर है, बट है नहीं इधर. सबका तीनों का अलग अलग जगह पर है. I was listening to you. No, it is difficult to control. I'm not saying she or he. Everyone, it happens. It happens with me also. Because concentration has to be bring. और बच्चा आज क्यों concentrate करेगा? जबकि ये टाइम पर उसको और कोई important friend के साथ बैठ के गपशप करना बहुत पसंद है. सर अभी क्या सर और 20-25 मिनट बाद मेरा फ्रेंड जा रही है, उसके साथ मुझे बैठ के बात करना था और आपका लेक्चर आ गया बीच में. Look what all the things they have in their mind. Despite all this, then फिर बोलता है economics ठीक है सुन लेते हैं यार. सर ना बेचारा गला पकड़ के चल रहा है. उसमें भी उसको नहीं सुनने का. She is giving sympathy to the teacher. Whoever is the she. So here I want to say fluctuations को control करना बहुत आसान है. आप per day before sleeping try to keep one small book or whatever it is. Try to write
4 or 5 good things that you have done every day. And tell me, maybe like 15 days after, you had coined all good qualities which you have it. फिर देखो आप में bad qualities minimum है. But हम उसका exact opposite करते हैं. Because good qualities are Yes. And it is the brain, your brain will definitely listen to you, not to anybody. I've seen certain girls and boys have this good habit of talking to themselves. What is that? You have to instruct your brain, and let me tell you, brain will never listen to, as in never listen to anyone. अगर आपका brain अगर आपका बात नहीं सुनता तो दूसरे का बात कहाँ सुनेगा? So you today try before sleeping, try to say some good things and try to visualize. those good things. अभी जैसे मैंने कुछ LOC बोला, laws of attraction, LOA, तो people answer laws and law of attraction. Law of attraction is nothing. अभी I am viewing this product as my dream. ये मैंने इस प्रोडक्ट को मैंने समझ लिया, खरीद लिया, ले लिया और ये प्रोडक्ट मेरे हाथ में. And let me tell you, if you get up 4 a.m. in Sundays and do some of this practice, you feel that entire universe is helping you to grasp something. But हमारे यूथ लड़के और लड़कियां तो आजकल लव और दूसरे चक्कर में लगे हुए हैं. क्यों लगे हुए हैं? I don't know. What is the fancy? I don't know. Trend बन गया है. And what is that trend? Who has set the trend? Nobody knows. बन गया, हम भी करेंगे. और उससे बाहर नहीं, मेरा कचरा हो जाएगा स्कूल में. मैंने बोला कि तेरा मार्क्स या पर्सनालिटी है ना? Because it is very difficult to pull you out of that trouble. अभी बोलता है कि नारकोटिक से भी ज्यादा नशा इस मोबाइल में है. Yes, sir. How can you get drunk on because you are unable to come out of this habit. Oh, addiction. इसको अभी मैं बोला biggest narcotics. And when I said that day I was coming with health issues, if you remember, Yes, 2 days I didn't even want to see the mobile at all. Because so bedridden I was getting calls from everywhere. So 99% I avoided any calls. अभी भी देखता हूँ ऐसे नहीं कि नहीं है, but I try to keep it minimum. Why? Because I am getting addicted to this. And this addiction is one thing which you and me can thwart it away. अभी बच्चा बोलता नहीं सर सुबह का टाइम टेबल इसमें आता है, दोपहर का भी इसी में आता है. रुको आप वही देखते हैं, वो छोड़ के बहुत कुछ देखते हैं. Whichever I think is important I see it, but whichever not important that also I see it. And what is not important? सर अभी नहीं सीखा तो कभी सीखा. मैंने बोला बेटा आपके लिए टाइम है, वो बाद में, अभी सीख लो सर. So let us write fluctuations. आज का काम अभी करो, अभी का काम और कल का काम अभी. नहीं वो कुछ और से. My mom keeps on repeating it. Economic fluctuation widely seen, capital A. What? Economic fluctuation widely seen. Widely seen. Seen in capitalist sector. Go to socialism. No fluctuation. Widely. Yeah. WIDELY. Sometimes she goes blank. socialism. No fluctuations. Fluctuations क्यों रहेगा? तो सब तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है. और mixedness of class. प्राइवेट में रहेगा, पब्लिक में नहीं. Bit of fluctuation is found. Economic mixed में लिखो no fluctuations. Socialism no. Sir, mixed का तो socialism. Widely seen, not seen. Widely seen in capitalism, not seen in socialism. In mixed economy, very Very of fluctuations. Very few fluctuations. Low level of fluctuations. Why do And Mixed. low level of fluctuation. क्या? Low level of fluctuation. नींद से उठती है अभी. So let us finish up this chapter. How much more is left? Hey, you got developed economies. Underdeveloped. She said she'll start, but we don't know how much. Let us not take any risk, is it? Yes.
तो एक काम करो, हाँ, पहले चैप्टर रिवाइज करने थे। एक काम करो, यूनिट 2 तो में आना इसका क्वेश्चन आंसर्स पहले चेक करो और आस्क मी, फिर नेक्स्ट 5 minutes I will start the chapter 1 and chapter 2 for you. I was about to close the exam. So, wait, don't touch it. No, I put my book over here and went to the right cross. So you want me to keep it on the right cross? You come this side. चलो, So क्या? question answers check करो. Any other questions you feel? Your ma'am goes through the question answers of your textbook. Yes. Yes sir. करो. That is what I am taking a little bit casual. वो सलीम रहेगा, उसको मैं पूछते आता हूँ, ये तुम्हारा कॉपी का क्या है? क्या? नहीं वो वॉल्यूम मैडम सलीम रहेगा. What are you doing? Don't do that. My new pen, give it back. It's a new pen. Yes, give it back. No. Give it back. No. Give it back. No, don't do that. No. No, no. No. Give it back. No. Give it back. No. Stop. What a minute. Which of this what? Just call me a bitch. I have to tell sir. बता दो. Sir, I am gay, sir. Kasyap is using phone. Kasyap. Kasyap. The chain is all wrong. So serious. Addicted. Why quiet so long? I should record. Oh, you know this camera. Oh, बंद हो गया. Oh, oh, it doesn't record shit. Kasyap. Why? So serious. I think so. So after slow First. Which of the I lost my. अरे यार, I lost my छोटा check with my economic idea. तो तू वापस लिख ले instant ramen noodles. रामेन नूडल्स. हाँ सही है. Actually अभी भी बना सकते हैं. New noodles. I should get children है ना? नहीं है, एक ही है. और give it to and give it back. No thanks. Sarah. You want? Okay. Sarah. What do you want? Sarah can't. Okay, I'll write it again. Sarah can't. Sir, देखो सीटी बजा. देख तू इससे ज्यादा जोर से विसल कर. देखो इसको करने नहीं आता है. वैसे ही कर रही हूँ मैं. अब तो तू देखो. सारा तू वापस वो बंद करने वाली जी. क्या? वहाँ पे देख. नहीं ऐसे करो. बहुत सो गई. किसे बना रहा है? Stop. अलग करके कभी लगा चिकनी करेगा. अच्छा आओ. Don't do that. What are you doing, Masti? दे देना. ठीक है ना ये दे. Don't do that. I'm ready to go. Don't do that. Stop. Jay, I'm Why is everybody so serious? Why? I'm Rashmi, writing answers. Rashmi, Nervous नहीं
आणि लाईट येत होते ग्रीन लाईट येतात आणि Sir, Sarah and Kashyap will listen. You want also explain? I don't know how to listen. I'm trying to look at this also. It is important in between the lectures. And sir, Sarah is not giving my pen back. I took it for Give that piece of paper, my dear. Yes, sir. Give it here. One day. The I kept the work over there. carry on. Yes, sir. And by क्या Uh, निकालूं तो सामने का दूध आप बाहर Sir, इसमें भी किया. हाँ मैं रुको करता हूँ खुद ही करता Sir, हूँ मैंने mistake In किया. between class is going on next. it's Sir, मैंने थोड़ी mistake. Sir, ये भी This is the other girl. Huh? What is that? Wow. Missing. Girls. She was also. Sir, I don't know how to She listen. was Sir, Yes. इसको ऐसे से लेती. मतलब all three are Adivasi and hooligan is it? Sir, I don't know how to listen. You do something else then. ऐसे कर रहे Hmm. चलो. Hey, I've asked for the book. It is under printing now. You will be getting it shortly. Sir, अभी printing हो. चल Once रही है. the printing चालू कर. Like whatever answer Sir, I do got. you remember my name? What is? Try and guess. What does she look like? Kashif. Sir, my You are Kashif, na? no, I'm Kashvi. Kashvi. And you are Kashyap. Kashyap. हाँ. And she is You said my name like 5 Sarah. times. Sarah. Sir, इसका नाम तो एकदम easy है. Very good. My father's name is something different. only. विद्याधर यादव. विद्याधर केलकर. ठीक है जाने दो. Now take up the chapter number 1. Let us do some revisions quickly. Chapter number 1 and chapter number 2 is for the exams. Yes, sir. I think ma'am gave us important questions. Shall I give you some question banks? No, okay, sir. Write down for chapter number 1. And try to. I'll give you that 2 marks or 4 marks questions. 4 marks. कितना मार्क्स का पेपर है? 40 मार्क्स का पेपर है ना? हाँ तो आएगा. एक 4 मार्क्स का दुआ है. Why do you need it? Just ask. Let your mother come and hand it over to her with my computer message into it. Okay. I don't need it. Why asking? Because I want to read. Bravo. Sir, first question. First question. Introduction to economics. Point number. Introduction to economics. Economics. Explain. Sir, second question. Question. Sir, good question. Not if you have words. Sir, explain. Sir, उसमें बाजू में कौन है? नहीं. Samuelson's definition of economics. Samuelson's definition is the Question scarcity में definition. Yes. Where there's a very Sir, इसमें question का नाम. Question bank and giving. Sorry, sir. Second question. Sir, explain. Samuelson's definition of economics. So it's called the scarcity definition. It's an interrelation between human wants and scarce needs that have already Which have alternative uses. Go for question number 2. Why Adam Smith is regarded as father of economics? And he's the first person. जब लिखो. No, he's the first person. तुम लिखो my dear. I'm like this. Sometimes I feel so Why loud. Adam Smith is सुनती ही नहीं. Why Adam Smith is regarded as the father of Why economics? Adam Smith is regarded as Father of economics. is Very important. Next one. regarded. Distinguish between micro and macroeconomics. ये तो sure shot है. Differentiated. Micro and macroeconomics. Next. Next.
Classify economic activities. Classify economic activities. Next. Critically, explain the wealth definition. Well, definition was given by Adam Smith. Adam Smith. Of economics by Adam Smith. ये जो तुम्हारा पेपर Explain. You also have no use. Explain the well definition of. Adam Smith. You got second chapter as well? Yes, sir. Shall we? So these are the What is that? chapter Topics, some women. questions ma'am. ये क्या है? टॉवल ही अंदर फोल्ड करके रखी है. So ma'am. And why is your handwriting is so? जल्दी से खा रहे थे मैम बेटा. हमारा handwriting ही इतना ही है ना. Right up. Chapter number 2. ये only 2 chapters No, are sir, there. 3 chapters are there, but chapter 3 में बहुत कठिन है. मतलब आज सब omitted है. This is third, right? Wait. हमारा टीचर के मुंह में लगा comment. Whatever a box no is omitted. ठीक है. Let me finish the second chapter. Write down for second chapter. Define household sector. Household, HH. Define. Actually, who are household है उसी को मैंने चेंज किया. Define household sectors. बस. Question 2. Explain the importance of producers in a given economy. Producers in a given economy. Third. Next. Classify economic activities. Classify economic activities of an economy. So what's the second question? I forgot my idea. Explain the importance of producers in a given economy. So third, classify economic activity of an economy. Or a class Explain question. the importance of an economy. Third question, no? second question. Explain the importance of producers in a given economy. So fourth, Describe. Distinguish between Mesh between primary, secondary, and tertiary. and tertiary sector. Distinguish between primary, secondary, and tertiary sector. That's it. Chapter number 3. Three questions written on ये पूरा मिस मतलब नहीं है. Whatever a box, no, it's full box. अच्छा, you only created a box, is that? Yeah, I made the boxes just in case term 2 में आएगा and अच्छा. chapter 1. What is talk to me? You have to do the same as you would there also. Ninth, they are taking them for a ride. In fact, I tell all my teachers now who are working, अभी तो मैं नहीं जा रहा हूँ. Ninth में जितना आप उनको screw tight करेगा उतना better. 10th में आके तो हाँ, फिर 10th में आपकी एकदम ज़्यादा ही level बढ़ जाता है. बढ़ जाता है and they don't want to listen also. 10th day. Because I never taught this 9th and 10th. I teach only 11th and 12th. And मेरा तो teaching नहीं रहता है, बाकी बहुत सारा काम रहता है. But
फिर भी दिन में 2 लेक्चर या 1 लेक्चर के लिए जाता हूँ। अभी तो वो भी बंद कर दिया। Next one. I'm unemployed now. Said you were working here. That is my Hobby? not hobby, you can say. Then part-time. My heart connection to unity, cordial connections. MCQ? It's Sir, from Haan ji. how much years you are working here? good number of years. I don't know. And again? Nah, distinguish between value and price. Distinguish between value and price. Question 2. Define utility. ये बहुत श्योर है, याद है मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा था. Yes. Define utility. Mention its types. Types है ना आपको? I don't think. Right. I don't think it is. There. है. हाँ. हाँ. देख लो एक बार डबल कंफर्म. कौन से पेज पे है utility? फर्स्ट पेज पे देखो ना. Third chapter है ना? Classification of wants, human wants, what person material, finding which use. Right, types तो right. Types नहीं है sir. Are you sure? Yes. हाँ, overrated. हाँ तो जी. क्वेश्चन मत ले. Define utility का. एक काम करो, instead of looking at the page, I will look at the chapter only. Give the questions. Easy. क्या omitted है? Define utility बस. बस. Types में. Define money. Capital. Define money capital. Money and capital. Money capital कैसे है? Sir, आपने बोला money. हाँ तो कॉमा डालना भूल गया. Capital और sir. I am looking into the pages only. See how nicely you are. You nicely close your mouth for the day, then we will be happy. Explain characteristics of utility. Main characteristics of utility. Explain main characteristics of utility. First one that one. Next. Distinguish between. In next week we will continue the lectures, and if you feel that you want me to teach some concepts from here, I am ready. Consumer goods and capital goods. Distinguish between consumer goods and capital goods. Right. And the last question. Five, 4, 6. List out. List में कभी explain नहीं करना है. Careful with the words. List out. Main characteristics of. Main characteristics of human wants. Now you can relax. Want anything you can ask me. So we got lovely 4 minutes. Tell me. So from next week correction लेने वाले हो तो. अभी start कर दो. कल ही मैं ले लेता हूँ बुक आपका. Tomorrow you guys are coming? No sir. Saturday, Sunday. Sunday you are coming, na? No. Test is there, na, my dear. When? I'm asking. Sunday को test है. Sunday को नहीं. She's totally sure. क्यों? Tuesday को दे देते हैं. Sunday को नहीं. तो I'm busy on Sunday. क्यों भाई? Hey, my dear girl, if you are busy, what is that? Let them. No, so then why are you saying no? Let them do it. You want to do it? What do you want to How much do? is it? Yeah, all three are doing any constructive work.
He is banging his teeth and that pencil pen. चलो read करो. सर 3 मिनट बचे. So what? 3 मिनट में दुनिया इधर का उधर हो जाता है. Yes sir. Nuisance things they'll tell you. चलो जल्दी करो. सर काशी हॉस्पिटल और वो आपको देखेंगे सर. नहीं सर. सर से एक बार पढ़ा के देखिएगा वैसे क्या फिर वापस ऐसे. ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम मैं उसको देखता हूँ तो बट यस. why is making nonsense. नाइस सर. काफी यहाँ में चल रहा. All three look at their ना perverted brains है. ये एक पेपर को पता नहीं कितना एंगल से पढ़ रही है. She is totally messing with all the pages and he is totally fiddling with his pen. Today is the last day. I am giving 4 or 3 minutes sir. Okay sir. Okay sir. Next week है ना break भी नहीं दूंगा मैं पहले बोल देता हूँ. True sir. Because of your later you forgot. Okay sir. You forgot. मेरे को लगा सर अभी. अभी क्या कर देगा? अभी तो आपको घर Don't come early then. Yes sir. Not early. Even on time is expected. On time. अपना मर्जी से कुछ भी 6:30 6:25 आता है. जबकि लेक्चर कितना बजे है? 6:15. नहीं 5:15. 4:15. हाँ 4:15. 4:15 sir. हाँ. Nice. So before 4:15 you should be here. You know pen. Let me see what Wait, you pen. think. No, that's my pen. This is your pen. जाओ सर जाते जाते वो डिसाइड करते हैं.